Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series, we are going to discuss section 370 to section 374 of IPC, which talks about the concept of trafficking of person, and section 370 talks about trafficking of person. Section 378 talks about exploitation of trafficking of persons. Section 371 talks about habitual dealing in slabs. Section 372 talks about selling minor for the purpose of prostitution. Section 373 talks about buying minor for purpose of prostitution, etc. Section 374 is the last section, which talks about unlawful compulsory labor. So let's read the bare act language of section 370, trafficking of person. Trafficking of person. What is trafficking of person? Basically trafficking of person is someone who is recruited, transported or transferred or hired illegal means for like fraud, force or other forms of coercions. The main purpose is purpose of exploitation, like forced labor, slavery, servitude means being a slave, and removal of organs of human beings and selling of that organs. Okay, so this is called the trafficking of person. Now come to the bare act language. Section 370, trafficking of person, whoever for the purpose of exploitation A recruits, transports, harbors, transferred. Okay, harbors means to hide or protect something, like receives persons or persons by first. So these recruit, transports or harbors or transfers of persons receive person or persons by. First one is using threat operation. So first is using threat, second one is using force or any other form of coercion. Using force or any other form of coercion means threatening. There is a physical threat. Third one is by abduction. Fourth one is by practicing fraud or deception. Fifthly is by abuse of power, and sixthly is by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, hired, transferred or received commits the offense of trafficking. Basically here it is saying that if any person, whoever for the purpose of exploitation recruit or transport or etc and etc, like transfers for the by using some force, by using some physical threat, by using by the form of coercion, there is a abduction means एक तरीके से अपहरण कर लेना किसी को काम करने के लिए, काम करवाने के लिए. फोर्थली बाय प्रैक्टिसाइजिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, धोखाधड़ी से उसको ले जाना कि पैसे दूंगा और फिर उसके बाद उससे काम करवाना, फोर्स लेबर करवाना, प्रोस्टिट्यूट करवाना, बहुत तरीके का काम करवाना, जो कि जैसे बहुत सारे काम होते हैं जैसे फोर्स लेबर करवाना, स्लेवरी, सर्विट्यूड, या फिर उसके ऑर्गन्स को रिमूव करके बेच देना. तो ये सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आते हैं. दिस कम्स अंडर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. फिफ्थली इज बाय अब्यूज ऑफ पावर. सिक्सथली इज बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड. ओके, जिस व्यक्ति को रिक्रूटेड किया जा रहा है उस पे उसके ऊपर जिसका कंट्रोल है उससे बेनिफिट लेना इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट लेने के लिए. ट्रांसपोर्टेड, हार्वर्ड, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड, सो कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग. ये ट्रैफिकिंग के अंदर आएगा. दिस विल कम्स अंडर द ट्रैफिकिंग. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 370. The expression exploitation shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation. Any including act of physical exploitation or any form of sexual exploitation. Slavery, जो दास होते हैं, दासी लोग होते हैं, दास लोग जो होते हैं जिनको एक तरीके से फॉर बीइंग अ स्लेव उसको रखा जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, तो लाइक अ कंडीशन ऑफ बीइंग अ फोर्स टू ओबे द अनदर पर्सन, उसको फोर्स किया जाता है कि वो उसका बात मानेगा. और प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी. सर्विट्यूड मतलब उसी तरीके से बीइंग अ स्लेव वो रहता है, उसका बात मानता है. ठीक है. एंड द फोर्स रिमूवल ऑर्गन्स. कई बार फर्स्ट वन यहाँ कह रहा है कि फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होना बहुत जरूरी है. सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है इसमें ट्रैफिकिंग में. स्लेवरी होता है, सर्विट्यूड होता है. फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, किसी व्यक्ति को लाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ देयर ऑर्गन्स एंड बाय सेलिंग देयर ऑर्गन्स they are earning money. Okay, explanation 2. The consent of the victim is immaterial
in determination of the offense of trafficking. So the consent of victim is not important, okay, is not important under the case of offense of trafficking. Now come to the punishment of trafficking of person. What are the punishments under section 370 if there is a trafficking of person? Now come to section 370 subsection 2. Whoever commits the offense of trafficking shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, but which may extend to 10 years. Which shall not be 7 years, which can be extended to 7 to 10 years. Whoever commits offense of trafficking. Now come to 370 clause 3. Where the offense involving the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years. Means if the trafficking of more than one person, there is a trafficking, मतलब आप अगर ट्रैफिकिंग कर रहे हो एक से ज़्यादा व्यक्तियों का, तो इसमें क्या है, आपके पास रेगुलर इम्प्रिजमेंट है किससे, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, ओके, एंड विच मे बी एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में भी बदला जा सकता है. एंड नाउ कम टू subsection 4 of section 370 where the offense involves the trafficking of minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but with वही बात है imprisonment for life तक इसको ले जाएगा. Means where the offense involves trafficking of a minor. Now come to subsection 5 where the offense involves the trafficking of a more than one minor. एक से ज्यादा माइनर को एक साथ ट्रैफिकिंग करना. It shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years. Remember 14 years. 14 साल से अगर माइनर को आप ले जाते हो तो 14 साल से ज्यादा का सजा होगा, 14 साल से कम का सजा नहीं हो सकता आपको. और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. Okay. Now come to subsection 6. If a person is convicted of the offense trafficking of a minor on more than one occasion, okay, then such person shall be punished with imprisonment for life. Such person shall be punished for imprisonment for life. So which shall mean imprisonment for the remainder of the person natural life and shall also liable to fine. Means trafficking of a minor, offense of minor more than one occasion. Okay. Now come to subsection 7 where when a public servant or a police officer is involved in trafficking of any person, then if any public servant or police officer involved in this category, then what will happen? Let's read. Such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, punished with imprisonment for life, and which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life and shall also liable to fine. There is a punishment for imprisonment for life. Okay, so remember, if any public servant or any police officer involved in trafficking basically, then there is a punishment of imprisonment for life, and for the remainder of that person natural life shall be like imprisonment. Okay, now come to section 370A. Section 370A talks about exploitation of trafficked person. किसी ट्रैफिक पर्सन, किसी को उसको तस्करी करके लाया गया, उससे एक्सप्लॉइटेशन करवाया जा रहा है, उसके ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और उससे काम करवाया जा रहा है, तो ये एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करता है सेक्शन 370A. Whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, engages such minor for a sexual exploitation in a manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years. याद रखिएगा, rigorous imprisonment जो कि 5 साल से कम का नहीं होगा और उसको बढ़ाया जा सकता है 7 सालों तक अगर एक्सप्लॉइटेशन करेगा किसी ट्रैफिक पर्सन को. तो ठीक है, सबसेक्शन 2 बोलता है whoever knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for a sexual exploitation in any manner shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years. यहाँ पे बात किया गया एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक चाइल्ड का बात किया गया जिसमें पनिशमेंट 5 से 7 साल के बीच में है. देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ 5 to 7 years. एंड नाउ कम टू सबसेक्शन 2 वेयर द पनिशमेंट इज डिफाइंड हियर लाइक for the exploitation of a trafficked person. So here the punishment is 3 years and which can be extended to 5 years. Okay, so here whoever knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for a sexual exploitation in any manner shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also liable to fine. Fine is okay. Now section 371 habitual dealing in slaves.
हैबिचुअल डीलिंग्स इन स्लेव्स, हैबिचुअल है अगर कोई ऑफेंडर, हुएवर हैबिचुअली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, रिमूव्स, बाइज, सेल्स और ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। याद रखिएगा सेक्शन 371 में जो बताया गया ये लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा है। इसमें जो हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स में जो हैबिचुअल डीलिंग करते हैं विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। ओके, 10 साल तो होगा ही होगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगा। Now come to section 372, selling minor for the purpose of prostitution. Selling minor for the purpose of prostitution. Whoever sells, lets to hire or otherwise dispose of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, okay, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with the imprisonment of either description for a term which shall extend to 10 years and shall also liable for fine. Basically punishment is here. Punishment involves in classification of offense is here under case of selling of minor for the purpose of prostitution. Okay, so here the punishment is 10 years and it is, as you know, non-bailable and triable by court of session. So let's read the explanation of section 372 where the selling minors for the purpose of prostitution के बारे में बात करता है. सो यहाँ पे पनिशमेंट तो जान गए, पनिशमेंट 10 साल तो मिलेगा ही आपको. एक्सप्लेनेशन में बात करता है व्हेन अ फीमेल अंडर एज ऑफ 18, जब कोई महिला 18 साल से कम की है, इज सोल्ड, लेट फॉर हायर, सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ टू अ प्रोस्टिट्यूट के पास उसको ले जाया गया, और टू एनी पर्सन हु कीप्स मैनेजेज अ बोटल, कोई ऐसा मतलब प्रोस्टिट्यूट या फिर कुछ ऐसा मैनेज करता है, द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ सच फीमेल शैल until the contrary is proved be presumed to have disposed of her with intent that she shall be used for the purpose of prostitution. जब तक प्रूव नहीं हो जाता उसको ये माना जाएगा कि ये पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही हुआ है. ये सेलिंग ऑफ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन हुआ जो कि सेक्शन 372 धारा 372 के आईपीसी में बताया गया है, भारतीय दंड संहिता में. Now come to explanation 2. Explanation 2 क्या बोलता है? For the purpose of this section, illicit intercourse means sexual intercourse between persons not united by marriage or by any union or tie which through not amounting to a marriage is recognized by the personal law or custom of community to which they belong, or which they belong to different communities of both such communities as constituting between a quasi marital relation. Okay, now come to section 373, बाइंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. माइनर को बाय करना फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बाइंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. सो कम टू सेक्शन 373. लेट्स रीड. हुएवर बायज, हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर द age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable for fine. So if you are buying minor for the purpose of prostitution, then this is the offense under IPC section 373. It is defined under, and punishment is here 10 years and fine. Okay, or fine, also liable for fine. So explanation, come to the explanation first of section 373. Any prostitute or any person keeping or managing a brothel who buys, hires or otherwise obtains possession of female under the age of 18 years shall be, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. उसको मान लिया जाएगा. बिफोर हमने पढ़ा था सेक्शन 372 में, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया सेक्शन 373 में. So explanation second, illicit intercourse has the same meaning in section 372.
illicit intercourse has the same meaning which is defined under section 372, no problem. Come to section 374, unlawful compulsory labor. Whoever unlawful compels any person to labor against the will, hired or transferred like for the purpose of laboring, and that laboring is not willfully, not voluntarily, against his or her will. So this is not lawful. This is unlawful compulsory labor. Remember. So may extend to 1 year. Here the imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year with fine. Okay, 1 year with fine. So section 374, unlawful compulsory labor, where the punishment of imprisonment for 1 year, as you know. Now come to section 373. 373 punishment is 10 years. Okay, imprisonment for 10 years. And section 372, where the punishment is of the 10 years. Thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.